Hi guys, I am Kothari. Welcome to this new video again. And this video is about my resource Mindmaps. ठीक है, इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि Mindmaps कैसे यूज करते हैं. ठीक है, अब कोई भी लेवल तुम पढ़ रहे हो, AS और A2, you will have this folder. I'm going to share it on a screen right now for you. जिसमें रिसोर्सेज का फोल्डर है. ठीक है, A2 AS O लेवल्स. अब जो भी लेवल तुम पढ़ रहे हो, लेट्स से अगर तुम AS लेवल पढ़ रहे हो, इन रिसोर्सेज में एक फोल्डर है माइंड मैप्स का. तुम माइंड मैप्स पे जाओगे और किसी भी यूनिट में तुम लेट्स से किसी भी चैप्टर का तुम माइंड मैप देखो, लेट्स से चैप्टर 1. तो नाउ दिस माइंड मैप ऑफ लेट्स से चैप्टर नंबर 1 is a snapshot summary of this entire chapter, and this is a very good resource when you want to close a chapter. चैप्टर खत्म करना हो, एंड हो गया, माइंड मैप पे आओ, उसको जस्ट चेकलिस्ट कर लो कि क्या तुम्हें ये वाले सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं है. सो दिस विल जस्ट add your course a much nice full stop to that chapter. This is what mind maps is, and I hope this resource will be very useful for you all, and I hope you are liking it. And we intend to improve, so drop us your comments and your feedbacks. We are going to improve further. So thank you very much for watching, and see you in the next video.